कुछ दिनों पहले ना I had the pleasure of watching a Bengali movie, Nirbhashito. It was India's official entry to the Oscars in 2015, and that year it also won the National Award for the Best Feature Film in Bengali. The director of the movie is Churni Ganguly, lovely name by the way. She also plays the main lead in this movie. By the way, that's also the same lady from this latest Ranveer Alia wali movie. बेडरूम में जाकर अपना कपड़ा निकालो, मैं आता हूँ. गलत होगा आंटी, आप रानी मम्मी हैं. Anyway, कहाँ थे हम? हाँ, the movie Nirbhashito is about a Bengali writer who has been banished from her home country because she was writing against religious fundamentalism. Overnight, she has to leave the country and she moves to Sweden. What I found interesting was that instead of focusing on very serious things like the politics of it all, the movie focuses on something completely else. The relationship of the writer with her pet cat, Baghini. The majority of the film is how the writer goes to great extents to reunite with her pet cat. Oh. Some of you might be able to see that this story is inspired from the real life of Taslima Nasreen ji. Right from the cat, to her hairstyle, to the events described in the movie, the film does a really good job humanizing the character. I don't know about you, but after watching any movie or series, I like to follow the actors on Instagram, sometimes the directors, stalk them a little, find out what their second cousin's Taiji is doing on Facebook, you know, the normal usual stuff. So I kinda did the same here, and I stumbled upon something really interesting. This interview from the year 2016. ये इंटरव्यू है ऑफ तस्लीमा जी विद द ओडिया चैनल कनक टीवी. लेट्स प्ले. नमस्कार. आज आम सहित अछंती प्रसिद्ध एवं विवादीय बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन. आसंतु तांको सहित कथा हबा. कनक न्यूज को आपन को स्वागत करूची. आपण 2011 रे पुनी थरे भारत फेरिले, किंतु तापरे आपण दिल्ली रे रहिचंती, बेसी कुआडे आ बाहर को जाय नांती. एबे किछि दिन हबो केरल जायथिले और बे ओडिसा आसीचंती. तो आपनका भारत रे एबे स्टेटस टा कोन? আসলে 2011 থেকে আমি দিল্লিতে আছি, কিন্তু ওই হায়দ্রাবাদে 2007-এ আমাকে অ্যাটাক করার পর, তারপর কলকাতায় আমাকে গৃহবন্দী করার পর আমাকে ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হলো. তারপর থেকে আমাকে বলা হলো তুমি দিল্লিতে থাকতে পারো, किंतु दिल्लीर बाहरे कोথাও बेरोबे ना. तुमने कुछ नोटिस किया? ये दोनों दो अलग अलग लैंग्वेजेस बोल रही हैं. इंटरव्यूअर अपने सवाल ओडिया में पूछ रही है और तस्लीमा जी अपने जवाब बांग्ला में दे रही है, ऑल विदाउट एनी ट्रांसलेटर और टेलीप्रॉम्प्टर. अपेरेंटली ये इंटरव्यू इंग्लिश में होने वाला था, बट एंड मोमेंट पे तस्लीमा जी ने सजेस्ट किया कि दे बोथ स्टिक टू देयर ओन लैंग्वेजेस. इंटरव्यू के एंड में द इंटरव्यूअर एडमिट्स कि शी वाज आल्सो शॉक्ड बाय द सजेशन. इंटरेस्टिंग कि मु आपन को इंग्लिश रे इंटरव्यू नवा पे प्रस्तुत थे कि आसीथिली, किंतु लास्ट मिनिट रे यू सेड कि आपण ओडिया रे कोहंतु, आपण बहुत भलो भाबरे ओडिया बुझी पारुचंती. आ सरप्राइजिंगली मु भी बेंगली बुझी पारुची, एंड वी जस्ट हैविंग दिस कन्वर्सेशन व्हिच इज वेरी सरप्राइजिंग. আমি আপনার সব বুঝেছি উড়িয়া ভাষায় যা বলেছেন. ডিড ইউ এক্সপেক্ট দ্যাট? আমি এটা ভাবিও নি. আমি ভেবেছি যে আমরা ইংলিশে কথা বলবো. তখন কালকে যখন আমি ওই বাংলায় কথা বলছিলাম, বাংলায় কবিতা পড়েছি, তাতে যখন আমি দেখলাম মানুষ অডিয়েন্স থেকে বুঝতে পারছে সব এবং কি হাততালি দিচ্ছে, না বুঝলে তো দিত না না. তখন আমি ভাবলাম যে ওরা তো ইংরেজির চেয়ে আমার মনে হয় বাংলা বললেই ভালো. তো যেই বাংলা আমি কথা বলার সুযোগ পাচ্ছি না কোথাও, কারণ আমি তো বাংলার বাইরে, পূর্ব বাংলারও বাইরে, পশ্চিম বাংলারও বাইরে, দুই দেশেই আমার যাওয়ার কোনো অধিকার নেই. সেখানে আমি বাংলায় কথা বলতে পারছি উড়িষ্যায় বসে, উড়িষ্যার অনুষ্ঠানে এবং সাক্ষাৎকারে. আমার মনে হচ্ছে যে এটা আমার দ্বিতীয় বাংলা. इस इंटरव्यू को देखने के बाद मैं सोचने लगा कि वाकई बांग्ला और ओडिया में कितने सारे सिमिलैरिटीज हैं. फ्रॉम अ डिस्टेंस इट माइट इवन फील लाइक बोथ कल्चर्स आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल. एग्जाम्पल के तौर पे दोनों स्टेट्स आर कोस्टल स्टेट्स, देयरफॉर दोनों को मछली काफी पसंद है, दोनों गेहूं से ज्यादा चावल प्रेफर करते हैं, दोनों की मिठाई की ऑब्सेशन के बारे में तो आपको पता ही है, बोथ आर वेरी रिलीजियस. दोनों स्टेट्स में बच्चे टेक्निकल कोर्सेज कम और ह्यूमैनिटीज ज्यादा लेते हैं. So basically there are a lot of similarities. Linguistically भी Bengali and Odia are closely related. दोनों भाषाओं का सृजन संस्कृत से हुआ था. To be precise, मगधी प्रकृत से. Which is why you will find कि दोनों भाषाओं में शब्द काफी मिलते जुलते हैं.
आयरनी की बात लेकिन ये है कि इन सिमिलैरिटीज की वजह से कभी कभी ऐसा लगने लगता है जैसा ओडिया फेड्स अवे इन द शैडोज ऑफ बांग्ला. Growing up, I realized that in shows like Shakalaka Boom Boom or Tarak Mehta Ka Ulta Chashma, there would always be one Bengali character or a family, but rarely would there be a Odia representation. People know about great Bengali leaders like Tagore, Vivekanand, Ram Mohan Roy, but शायद ही लोगों को किसी ओडिया लीडर के बारे में पता होगा, maybe except for नवीन पटनायक जी. Therefore, इस वीडियो के जरिए मैं आपको परिचित करना चाहता हूँ इन दोनों भाषाओं की खूबसूरती से. हम ट्राई करेंगे दोनों भाषाओं के स्ट्रक्चर को कंपेयर करने की. तो चलो आमे आरंभ करिबा ए नतून भिडियोते आपनाके अनेक अनेक स्वागत. दोनों भाषाओं के बीच जो डिफरेंस आप सबसे इजीली नोटिस करेंगे वो है इनकी स्क्रिप्ट या लिपि. क्या नोटिस कर रहे हैं आप यहाँ पे? हम देखते हैं कि ओडिया लेटर्स आर राउंडेड, गोलू मोलू जैसे, जबकि बंगाली लेटर्स आर काफी शार्प एंड एंगुलर. बंगाली स्क्रिप्ट में लेटर्स के ऊपर देवनागरी की तरह एक शिरोरेखा होती है, जबकि ओडिया हैज राउंडेड टॉप्स. लॉजिकली आपको लगेगा कि दोनों स्क्रिप्ट्स के अलग अलग ओरिजिन्स होंगे, बट टर्न्स आउट दैट इज नॉट द केस. अगर हम बांग्ला और ओडिया स्क्रिप्ट की इवोल्यूशन को देखें तो हम पाते हैं कि 7वीं शताब्दी तक दोनों स्क्रिप्ट्स ऑलमोस्ट सेम थे. इस कॉमन स्क्रिप्ट को सिद्धम स्क्रिप्ट या कुटिला स्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है. 7वीं शताब्दी के बाद हम देखते हैं कि दोनों स्क्रिप्ट्स अपने अलग अलग रास्ते चल लेते हैं. ओडिया स्टार्ट्स बिकमिंग राउंडर एंड राउंडर, starting to look a lot like Dravidian languages like Telugu and Kannada, जबकि बांग्ला becomes more and more angular like Devanagari. इसका मूल रीजन ये है कि ओडिया like other Dravidian languages started using palm leaves for writing. palm leaves में लिखने के लिए एक नाइफ जैसा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है. अब palm leaves का नेचर ही ऐसा है कि इसमें अगर हम स्ट्रेट लाइंस बनाएं तो इसमें फटने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है. Therefore, Odia like other Dravidian languages avoided a lot of straight lines in its script. Up, let's try to get a taste of how both these languages sound like. Let's take a look at this conversation. हिंदी में नमस्ते, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुब्रत है. इसको ओडिया में बोला जाएगा नमस्कार, आपणोंको ना कोण? मोर ना सुब्रत. और इसे बांग्ला में बोला जाएगा नमस्कार, आपनार नाम की? आमार नाम सुब्रत. नोटिस कीजिए कि दोनों लैंग्वेजेस में सेंटेंस के स्ट्रक्चर काफी सिमिलर है, बट वर्ड्स के बोलने का तरीका काफी अलग है. ओडिया यूजेस द साउंड ण, जो कि बांग्ला में एब्सेंट होता है. आपको ओडिया में कहते हैं आपणो एंड बांग्ला में कहते हैं आपनी. ये जो ण साउंड है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रेट्रोफ्लेक्स साउंड. रेट्रोफ्लेक्स साउंड जो होता है वो एक लैंग्वेज को एक क्रिस्पनेस प्रोवाइड करता है. अदर रेट्रोफ्लेक्सेस का एग्जांपल है ट, ठ, ड, ढ, ण, श एंड ळ. वैसे कहने को ओडिया एंड बांग्ला दोनों में ट, ठ, ड, ढ ये हैं, बट एक्सपीरियंशियली आप रियलाइज करोगे कि बांग्ला रियली हेजिटेट्स टू यूज दीज, व्हाइल ओडिया में ये साउंड्स काफी अबंडेंस में मौजूद है. प्रभु, लंकेश तो इस समय महाराज रावण. प्रभु, लंकेश्वर तो एबे महाराजा रावण. ऐसा कहा जाता है कि ओरिजिनली संस्कृत में रेट्रोफ्लेक्स साउंड्स नहीं थे. These sounds came later after contact with Dravidian languages like Tamil and Telugu. This shows कि ओडिया में द्रविडियन लैंग्वेजेस का इन्फ्लुएंस बांग्ला से काफी ज्यादा है. इनफैक्ट सदर्न ओडिशा के कई एरियाज में द्रविडियन लैंग्वेजेस लाइक कुई एंड कोया भी बोला जाता है. एंड ओडिया में कुछ शब्द तो डायरेक्टली तेलुगु से भी आए हैं. फॉर एग्जाम्पल, while jackfruit in Bangla is similar to Hindi, kathal and kathal, in Odia the term is panasa, similar to Telugu panasa. In Telugu, a child is called pilla, while in Odia, it's called pila. Also, both in Telugu and Odia, father is sometimes referred to as Nana. Even Odia numerals look a lot like Telugu numerals. These connections are not very surprising when you consider that Odisha has always had a strong link with South India. The ancient Kalinga Empire had a strong connection with the Chol dynasty and even the Vijayanagar Empire. 1400 के बाद जब बंगाल में इस्लामिक रूल एस्टैब्लिश हुआ था, Hindus continued to rule in Odisha for many centuries. And during this time, उनका साउथ इंडिया के साथ काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा था. एक और डिफरेंस है इन हाउ ओडिया एंड बांग्ला यूज द टर्म श. टेक्निकली दोनों में 3 श एग्जिस्ट करते हैं, स, श एंड श, बट दोनों लैंग्वेजेस के अपने अपने फेवरेट साउंड्स होते हैं. बांग्ला ऑलमोस्ट हमेशा ही श का यूज करती है, जबकि ओडिया यूजेस स. Therefore, in Odia, it is Namaskar and in Bangla, it is Namaskar. In Odia, it is Subrato. In Bangla, it is Shubroto. In Odia, it is Bhasa and in Bangla, it is Bhasha. इन दोनों भाषाओं में एक और डिफरेंस है जो आप नोटिस किए होगे अगर आप ध्यान से सुन रहे हो. ओडिया अपने हर शब्द के एंड में एक अ साउंड ऐड करता है. फॉर एग्जाम्पल, नामो, आपणो, मोर, while बांग्ला
sometimes has this and sometimes it does not. It is little difficult to predict without having practical experience. For example, let's consider this sentence. I am proud that I was born in India. इसको बांग्ला में बोला जाएगा आमी गर्बित जे आमी भारते जन्मग्रहण करेছি. Notice how गर्बित के end में there is the O sound, but जन्मग्रहण के end में there is no O sound. You don't say जन्मग्रहणो. Therefore, it is little difficult to say whether you should add the O sound or you should not. But contrast it with Odia. In Odia, you would say mu गर्बित जे मु भारतरे जन्मग्रहण करिछि. Here in both Garbita and Janmagrahana, you add the O sound. Therefore, that makes Odia a phonetic language. मतलब जो आप देखते हो आप वही pronounce करते हो. While Bangla is a non-phonetic language. इसका मतलब है जो आप लिखते हो you may or may not pronounce it. Kinda like French. French, what is this? That's goose. How is this pronounced? Wa. Which are literally the two vowels that are not in this word, so explain. Oh, well, because I didn't want to hurt anybody's feelings. You know, I used 3 of them, and I was like, well, I feel bad for you and A now, so I put them into the pronunciation. अच्छा, हमने ये तो डिस्कस किया कि ओडिया में द्रविडियन रूट्स काफ़ी हैं, बट अकॉर्डिंग टू अ स्टडी इट इज़ ऑल्सो एस्टिमेटेड दैट अबाउट 28% of Odia vocabulary comes from tribal languages, while Bangla has over 10,000 loan words from Persian. In fact, in some books of Bangladesh, it is estimated that about 31% of the words come from either Arabic or Persian. For example, while Odia and Bangla both call river Nadi or Nodi, the more common term in Bangla is the Persian influenced Doriya. Bangla calls it Khargosh, but Odia calls it Thekua. Bangla calls it Hawa, but Odia calls it Pobon. Bangla calls it Anar and Odia calls it Dalimbo. Since Bengal also was colonized by the Portuguese, it has a lot of Portuguese loanwords as well. A violin, for example, which in Portuguese is viola, in Bangla becomes behala. Odia calls it Badya Jantra. Window in Portuguese is janela, from which we get the Bangla janla. In Odia, the term is jhorka. Portuguese mein this fruit is papaya, which in Bangla is pepe. But in Odia, it is, wait for it, amruta bhanda. How epic. This in Portuguese is pera, which in Bangla is peara. But in Odia, it is pijuli. Therefore, हमारे observations के basis पे हम ये कह सकते हैं कि शायद ओडिया एंड बांग्ला दोनों एक कॉमन एंसेस्टर से डिराइव्ड हैं, जो कि इवोल्यूशन के साथ साथ अपने अलग अलग रास्ते चल लिए. This reminds me of the bug Pokemon Wurmple, जो अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक आइदर सिल्कून या कैस्कून में इवॉल्व कर सकता है. फिर जाके ये 2 पोकेमॉन्स अपने फाइनल इवॉल्व फॉर्म्स ब्यूटीफ्लाई और डस्टॉक्स में बदल जाते हैं. For some reason, Beautifly to me is kinda like Bangla and Dustox reminds me of Odia. अपने Silcoon stage पे Bangla gets influenced from Portuguese and Persian and becomes Beautifly, जबकि अपने Cascoon stage पर Odia gets influenced from Dravidian and Mundari languages and becomes Dustox. Bangla like Beautifly is the more extroverted one, जबकि Odia like Dustox is the more conservative, traditional one, kinda like Geeta and Sita. I think the difference becomes very clear when you compare the chief ministers of both states. আমি আবার বলছি আমি দুর্বল নই, আমি শক্তিশালী লোক. যতদিন বাঁচবো মাথা উঁচু করে চলবো, আর যতক্ষণ বাঁচবো রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের মতো বাঁচবো. মনে রাখবেন. मान्यवर मंत्रीगण, मान्यवर विधायकगण, प्रिय भाई और भोनी माने, 4.5 कोटी उड़ीसावासी मोर परिवार. The Bengali chief minister seems lot more animated, expressive and extroverted than her Odia counterpart, who seems much more reserved and a man of few words. Odias are more inwards, while Bengalis seem lot more expressive and not afraid to state their opinions. In some sense, you would say Odias are a lot more diplomatic than Bengalis. Also, while Bengal takes initiatives to include its tribal cultures, in popular culture it still largely idealizes the Bengali Bhadralok image. Jabki in Odisha you will see the culture go out of its way to preserve its tribal roots. For example, take the epic song Mile Sur Mera Tumhara as a reference. Look at how both these languages are portrayed. তোমার সুর মনের সুর সৃষ্টি করো হই কুসুর. তোমার সুর মনের সুর সৃষ্টি করো হই কুসুর.
সৃষ্টি হোক ঐকতা While Bengal is shown as this modern culture with metro trains, Odia is portrayed as this rural region. Finally, while these cultures are very artistic, both are artistic in their very unique ways. Odias tend to preserve, while Bengalis tend to experiment, which is why you will see a lot of historical art forms still survive in Odisha, like the Odissi dance, the Chhau dance, the Odissi music, Pattochitra paintings. Jabki in Bengal, you won't see a lot of historical things. Instead, what you'll see is a lot of modern music bands, multimedia art forms, installations in Durga pandals, and in general more out-of-the-box creativity. Anyway, ye to ho gaya Beautifly or Dust Talks ka baat. What about Wurmple, the common ancestor of Odia and Bengali? The stage when both these languages were practically the same. I did discuss कि इस स्टेज पर इस भाषा को टेक्निकली मगधी प्राकृत बोला जाता था, but it is a term that generally only linguists use. Commonly, people call this language the Shondha Bhasha or the Twilight language. इस भाषा में a lot of Buddhist saints had written mystical poems documenting Buddhist philosophies that became the backbone of Vajrayana tradition of Buddhism later. This collection of Buddhist poems is popularly referred to as Chaurjapad. Chaurjapads were written from 8th century AD to 12th century AD. Remember, this is also the time when Odia and Bangla scripts started taking their own paths. Why not listen to a Chaurjapad song written by the poet Kanhupa, and let's try to experience how this ancient Shondha Bhasha sounded like. Notice the lyrics. Ekoso padama chausati pakhudi tohi chadi nachoi dombi bapudi. Now, depending on how you pronounce, this could either sound like Bengali or Odia or even Ohomia, but that's the whole point. It wasn't either of those. It was all of those together. Khair. Aaj the tussle between Odias and Bengalis is very tame. Both fight over who invented the Rasagolla or the Rashogolla. But ek time pe the tussle was lot more serious. During the British rule, jab Odisha did not have an independent existence and it was split between Bengal, Madras and central provinces, there was an active movement led by some Bengali nationalists to suppress Odia as an independent language. The Odia of this district, whether it may originally have been, is not but a dialect of Bengali, from which it differs chiefly in pronunciations and its written character. I would submit as a measure of general policy, it is desirable that the Odia should cease to exist as a separate language within the British territories. ये बोला था collector of Cuttack ने in 1854. In the year 1870, Kantilal Bhattacharya, a teacher of the Balasore Jilla school, even published a book called Odia Acto Swatantra Bhashanoi, which means that Odia is not an independent language. His argument was that because Odia and Bengali have so many similarities, Odia must be a dialect of Bengali. In his worldview, the language in Chaurjapad wasn't Magadhi Prakrit, but it was Old Bengali, which somehow got corrupted by tribal languages of Odisha, and that is how Odia was born. According to him, if these impurities of tribal languages were removed, apparently Odia would be identical to Bengali. You can see that deep down this is a very problematic statement to make. To think of tribal languages as an impurity while Sanskrit as pure is fundamentally a casteist and a racist idea. But the main question remained, अगर दो भाषाओं के speakers को एक दूसरे की भाषा समझ में आती है, then isn't one the dialect of another?
You will be surprised to know कि the strongest defender of the Odia language was this British linguist John Beams. अपने 1867 की किताब Outlines of Indian Philology में John Beams कहते हैं कि whether a language was an independent language or a dialect cannot be ascertained from mutual intelligibility. Beams ने कहा कि ऐसा टेस्ट भारतीय भाषाओं के लिए सही नहीं होगा क्योंकि भारतीय भाषाओं में इतने सारे कॉमन शब्द होते हैं. A lot of them are mutually intelligible, but that does not mean कि वो एक दूसरे के dialects हैं. बीम्स का ये मानना था कि whether two languages are mutually intelligible or not is not an intrinsic property of these two languages. It depends on the intelligence of the individuals involved. Uneducated people will exaggerate the difference in their languages, जबकि educated people will underestimate the difference. He therefore suggested कि भारतीय भाषाओं को कंपेयर करने के लिए अंडरस्टैंडेबिलिटी के साथ साथ स्पीच पैटर्न्स, वोकैबुलरी, कल्चर एंड इवन हिस्ट्री को मद्देनजर रखना चाहिए. Odia identity के इस threat के कारण a lot of Odia literature readers started advocating for having Odia as the official language in regions of Odisha. Odia opposition का तब एक बड़ा reason ये भी था कि Odia language में text books ज़्यादा available नहीं थे. To tackle this, the great Odia authors and poets like Fakir Mohan Senapati, Gopabandhu Das, Gangadhar Meher, they all started writing widely in Odia. It was their combined efforts that in 1947, Odisha became the first state in India to be formed on the basis of a common language, Odia. So guys, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो please do subscribe and I'll see you in the next video. I would like to thank all the members of Indian Pixels. Debayan Mukherjee, Shweta Hiremat, Basant Kumar Soni, Dreadful Bodyguard, Chandrachud Pati, Ashutosh Mukherjee, Shubhranshu Sanyal, Harsh, Pankaj Mondal, Anand Rath, Nikhil Sharma, Pushpendra Singh, Komareddy Geeta Garu, Subhashri Patnaik, Nirup Naik, Sanjio, Beyond Questions, Mohua Moitra, Shantanu Banerjee, Shomwalina Taraftar, Mayur Rathod, Kunal Rathod, NFT Wala, Siddharth Mukherjee, Spurti, PSI Boy, Gandev68 and Shale Whale. Thank you everyone from the bottom of my heart and I hope to see you in the next video. Bye bye.